Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction and classification of animals. Let's start. Dear students, now diversity among animals. Dear students, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आपको याद है मैंने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में फुल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में पढ़ाया है. क्लियर, बहुत ही डिटेल के साथ एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया था. चैप्टर नंबर 10 द किंगडम एनिमेलिया, और ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स विच आर वेरी फ्रूटफुल रिगार्डिंग द एंटिटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. सो हम यहाँ पर इंडिविजुअली उस तरह से एक एक करके फाइलम के जो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो एंटिटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम है. क्लियर, और बाकी जो फुल डिटेल है वो हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं इन द कमेंट्स बॉक्स, एज वेल एज अगर आप एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें चैप्टर नंबर 10 को, तो इंशाल्लाह दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट. So kingdom Animalia. So the first thing is, so it is a Latin word. There is a Latin word called anima, which means breath or soul. तो ऐसी चीज़ें जिनमें बाकायदा तौर पर सांस लेने की जो है वो मरहले देखे गए, जिनके अंदर एक रूह को कंसिडर है, उन ऑर्गेनिजम्स को लातीनी ज़ुबान में एनिमा कहा जाता था. सो वहीं से ये डिराइव हुआ, एनिमा से एनिमल्स. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके कुछ फीचर्स, इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, so they are eukaryotic. Number one, they are ingestive heterotrophs. Number three, they can locomote and lack cell wall, and they are developed from two dissimilar जिसको हम एनआइसोगैमीट्स भी कहते हैं. गैमीट्स, here we are talking about the sperm and egg cell. Clear? And they are multicellular. Clear? So these are few basic features related to the animals. Dear students, if we talk about that जो ट्रेडिशनल शुरू में जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें दो किंगडम शुरू में बनाए गए थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी. Animals were divided into protozoa and metazoa. In protozoa, the unicellular animals were included.
फॉर एग्जाम्पल amoeba, paramecium, एक्सेट्रा। और जहाँ तक बात है मेटाजोआ की, सो इट इंक्लूडेड ऑल multicellular animals. For example, fishes, insects, etc. क्लियर? तो ये तो जो ट्रेडिशनल टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके एतबार से। डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। एक तो इनके जो सेल्स हैं उनके दरमियान में द कॉम्प्लेक्सिटी इन किंगडम एनिमेलिया, उसके रीजन्स में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो थी, दे हैव देयर सेल्स हैव tight junctions which are called desmosomes, जिसकी वजह से जो cells हैं they are interconnected to each other, और they have got various types of locomotions, locomotory organs, उसमें वैरायटी मौजूद है। देयर हैबिटेट, उसमें वैरायटी मौजूद है। वे ऑफ लिविंग, उसमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, सो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग to 5 kingdom classification, आपको पता है कि उसमें जो रॉबर्ट व्हिटेकर ने दी थी, इन विच अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट व्हिटेकर, और फिर बाद में जब उसकी मॉडिफिकेशन हुई थी मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने की थी, तो आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, द एनिमल्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज, 2 तरह के मौजूद हैं। पैराजोन्स and eumetazoans. Dear students, ऐसे animals, so the parazoans, they lack tissues organized into organs and organ systems. Clear? यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके टिश्यूज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फॉर्म द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, while the eumetazoans, their tissues are organized into organs and organ systems. The parazoans, they lack symmetry. They lack symmetry, मतलब they are asymmetrical. एक ही बात होगी, ठीक है? While the eumetazoans, they are symmetrical. They have symmetry, a proper symmetry. Clear? पैराजोआ के अंदर एक ही फाइलम इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल इज फाइलम
porifera. While in eumetazoans, it includes 29 phyla. याद रखिए, MCQ के लिए मार्क है कितने? 29 फाइला इसमें इंक्लूडेड है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेलमिन्स, and phylum Annelida, and Chordata, and Hemichordata, and Echinodermata. Clear? All of these. अब सिमेट्री की बात आ जाए. So if we talk about the eumetazoans, सिमेट्री, तो सिमेट्री के एतबार से दो तरह की सिमेट्री इनमें, ये दो तरह के हैं. Either they have got the radial symmetry or bilateral symmetry. Clear? Radial or bilateral symmetry. Radial symmetry, इसको हम इंक्लूड करते हैं इन grade radiata, and this is put into grade bilateria. Clear? अब जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं, they have got central axis, their tissues are organized around the central axis. The tissues and organs organized around the central axis in such a way that any line passing through central axis divides the animal into two equal halves. इनकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह से अरेंज की है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को कि सेंट्रल लाइन से पास करती हुई आप किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से, सेंट्रल एक्सिस से जब उसको लाइन को पास करेंगे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, सो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर. बट इन केस ऑफ बायलैटरल symmetry, so an imaginary line passing through, via means through, the center divides animal into almost left and right sides, left and right sides, जबकि इसमें no left or right sides, मतलब इसमें किसी भी एंगल से आप काटेंगे तो इसमें बाकायदा तौर पर तो लेफ्ट राइट नहीं कहलाई जाएगी, इनके तरफ बाकायदा तौर पर लेफ्ट राइट साइड होती है. They have anterior and prominent, इनका anterior end बहुत prominent होता है, which have head
सर वाला एंटीरियर, एंड अ पोस्टीरियर एंड, दो एंड्स हैं, दो एंड्स हो गए, ये देख सकते हैं, दो साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड्स, दो एंड्स हो चुके हैं, एंटीरियर और नीचे वाला पोस्टीरियर एंड, और टू सरफेसेस, दो सरफेसेस हैं, डॉर्सल जिसको हम कहते हैं बैक वाली साइड, सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, एंड वेंट्रल विच इज कॉल्ड द बेली, पेट वाली साइड। क्लियर? तो दो बाकायदा डिस्टिंक्ट साइड्स हैं, पीछे कमर वाली साइड डॉर्सल और पेट वाली साइड, बेली वाली साइड, दैट इज वेंट्रल। तो दो सरफेसेस, तो इनकी दो सरफेसेस, दो एंड्स और दो साइड्स मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड एज द बायलैटरल एनिमल्स। इसमें जो एग्जाम्पल है ग्रेड रेडिएटा में, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लियर, जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, नाइडेरिया। जबकि यहां पर a lot of phyla are there, for example from flatworms यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ से लेकर के टू फाइलम कॉर्डेटा, टू फाइलम कॉर्डेटा एंड तक, दे आर द बायलैटरल, देयर इज अ बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इसके एतबार से एक और चीज़, एक एक्सेप्शन है बायलैटरल सिमेट्री के अंदर, वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में भी, अब भी आपको एक दफ़ा याद कराता चलूँ कि यहाँ पर जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है, देयर इज एन एक्सेप्शन, उनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं, एकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म्स, वो बायलैटरल सिमेट्री शो करती हैं, जबकि उनके एडल्ट्स दे शो द रेडियल सिमेट्री। दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन अमंग देम। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक प्लान, that's the basic plan of the animals. So dear students, now the diploblastic and triploblastic organization. And triploblastic organizations of the body in animals, details से discuss हुआ. We are going to focus on the basic points related to MCQs of the anti-test. So diploblastic, diplo means 2, triplo means 3. So the diploblastic organization, it includes the grade radiata, while the triploblastic organization, it includes grade bilateria. Clear? Diploblastic organization, it is body made up of two germinal layers, that is ectoderm and endoderm, and in between a non-cellular mesoglea. Clear? While in case of triploblastic organization, they have 3 germinal layers
during embryonic life. Embryonic life, and that is ectoderm. It gives rise to, which forms integumentary and nervous system. While there is another layer, mesoderm, in between the ecto and the endo. So it forms the muscular system, reproductive system, the kidneys, and gonads, and the skeletal system, etc. और बहुत सारी चीज़ें, but these are the basic one. While the endoderm, the innermost, it forms a lining of gut and other organs related to gut, such as liver. Clear? Gut means the digestive system, gastrointestinal tract. And in diploblastic organization, there is no central nervous system. Rather, there is diffused nervous system. Clear? Nervous system, उसके लिए short form मैंने use किए. While the triploblastic organization, they have got central nervous system. So central nervous system is present. That is composed of brain and the spinal cord. They have sac type digestive system, while they have tube type digestive system, but not all, mostly, in most of them. Clear? And they have no transport system, कोई special transport system नहीं है. They have got specialized transport systems. Clear? यहाँ पर जो materials हैं, so materials are distributed by simple diffusion. Clear? तो जो इनके पास चूंकि स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, तो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंसेस बिटवीन देम. और इसके अलावा
जो डिप्लोब्लास्ट ग्रेड रेडिएटी आपको बता चुका हूँ, इसमें देयर इज only one phylum that is Coelenterata. और यहाँ पर अब फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है. They have the diploblastic organization. They are further classified into three categories on the basis of body cavity. On the basis of body cavity. और body cavity की डिटेल से बता चुका हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 में. So body cavity, it is the space between body wall and alimentary canal. उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो बॉडी कैविटी कहलाती है. तो उस बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर तीन तरह के जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. Acoelomates, pseudocoelomates, and coelomates. Clear? So these are the three sub classifications of the triploblastic animals on the behalf of the body cavity. Okay, dear students, now on the behalf of body cavity, we are going to split the triploblastic animals into three categories. Acoelomates, pseudocoelomates, and coelomates. Acoelomates, A means absent. So they have no body cavity. They have false body cavity. और इसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा. फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन की हुई है उसमें एक सूडोसीलोम कैसे बनती है, ठीक है. दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी which is not homologous to coelom or the true body cavity, because it is not derived from coelomic epithelium. इस coelomic epithelium से नहीं बनी, इस वजह से ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है तो सही लेकिन ट्रू नहीं है. क्लियर? एंड while in case of coelomates, they have body cavity, which is true body cavity, derived by splitting of mesoderm or by the outpouching of archenteron. Clear?
So that is the basic difference between them. यहाँ पर here the mesoderm है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों. यहाँ पर जो mesoderm है, it forms a loose packing around the mesodermal organs. तो बॉडी कैविटी तो नहीं है, लेकिन जो मेसोडर्म है वो मेसोडर्मल ऑर्गन्स के गिर्द एक पैकिंग बना देती है, which is called mesenchyma और parenchyma. क्लियर? और यहाँ पर द मेसोडर्म यानी जो है ये मसल्स बनाएगी. So this cavity is lined outside by muscles and inside by the cuticle of intestine. Clear? और यहाँ पर जो मेसोडर्म है, the mesoderm forms outer parietal layer and inner visceral layer. Clear? So इसमें ये difference आ गया. So here is a diagram. यहाँ पे थोड़े से पहले diagram को discuss कर लेता हूँ. The basic plan. So here is the diagram of these three organizations. Here is the coelomate, ectoderm, and here is the gut, which is lined by, over here is the endoderm. This is endoderm. और यहाँ पर मौजूद हैं the mesodermal organs और फिर उनके दरमियान एक लूज सी पैकिंग है. This is filled space, loose tissue, that is the mesoderm. So this is what we call as the acoelomates. Ectoderm, and this is mesoderm forming the mesenchyma or parenchyma. This is the mesoderm organ. And this is endoderm. And this is the gut. Clear? And examples are the phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes, or which are called as the flatworms. The flatworms, planaria, tapeworm, liver fluke, etc. etc. और याद रखना इनके अंदर किसी भी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है सिवाय दो सिस्टम कुछ बेहतर है इनके. They have
sac type digestive system and their excretory system have flame cells. You know very well that, ठीक है? Cilia or their flickering look like the flame or etc. बाकी इनके अंदर जो है nervous system is also there. They have central nervous system, but no respiratory system. Clear? And in this case, not derived by the coelomic epithelium, lined outside the muscles and inside by the intestines, have no relation. This coelomic epithelium से derive नहीं हुई, इस वजह से they have no relation with excretory and reproductive systems. Clear? And they have tube type digestive system. Clear? They have no true respiratory system, and they have CNS. They have no respiratory system. Clear? Or here's a diagram. The ectoderm, and here is the mesodermal muscle, and there is the gut and endoderm. Clear? Here is the mesodermal organ. Here we go. This is ectoderm, and this is mesoderm muscle. This is mesoderm organ, and this cavity is called pseudocoelom. So it is derived from blastocele, rather derived from blastocele. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? Pseudocoelom derived from blastocele, and this is endoderm. This is the gut. और जहाँ तक बात इसमें phylum की, so it have only one phylum, that is phylum Nematoda or Aschelminthes. Aschelminthes, जिनको हमने कहा था round worms, वो इससे belong करते हैं. And as far as the coelomates are concerned, so they have a true body cavity which is formed by the splitting of mesoderm or by the outpouching of archenterons. Clear? तो ये चीज़, और ये बाहर parietal layer, अंदर वाली visceral layer, and these are the most advanced type of the triploblasts. और इनके जो they have got specialized respiratory system, they have the digestive system, they have tube type. Okay, digestive system याद रखिएगा, tube type
digestive system is there. And they have CNS plus a respiratory system, most of them. And they have the transport system. They have their excretory system. मतलब कि ये सबसे एडवांस्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. And as far as their general body plan is concerned, so this is the ectoderm. And here is gut and endoderm. There is the mesoderm organ. और फिर उसके गिर्द है, here is the mesoderm. As you can see, it is splitted. This is ectoderm, and this is mesoderm, and this is coelom. This is mesodermal organ. Then endoderm, and gut is there, and this is the coelom. ये coelom है, clear? और इसमें examples from phylum Annelida, यानी कि segmented worms से लेकर के to chordata, all of them, Annelida and Arthropoda and the echinoderms and the hemichordates and the chordates, clear? Everyone, they have got this kind of organization. They have two body cavities. और यहाँ पर इसके अंदर होता है there's a coelom have coelomic fluid. The coelom possesses the coelomic fluid.